ऑलमोस्ट कवर कर लिया है सारा कुछ. Wrap up whatever few bits and pieces are left of today, or the other thing that we are going to do is maybe to let you ask questions, all sorts of questions, uh, so that if there is anything unclear, anything ambiguous in your mind, you can ask questions. Past papers में से कुछ questions हम देख लेंगे. आप कोई past paper में से कोई question देखना चाहें, so that is also going to be the feature of today's class. Baki, if you need anything, I am available. You can always get back to me. You can always look into the notes that I have already shared with you. I'm sure CSS Corner has shared uh, my notes with you on sociology. So these are the things that are important. Let me know if you are able to see. I think I have to stop screen sharing because for some reason sociology presentation जो है वो स्क्रीन शेयर पे गलत खुल रही है. Just give me a minute. So आप लोगों के कोई सवालात हैं, just let me know. This is going to be an open forum today, rather than जैसे हम आम तौर पे एंड में कर रहे होते हैं, लेकिन आज you can ask questions because अभी भी जो टॉपिक है वो मोस्टली हमने उसको भी कवर किया हुआ है. सिर्फ और सिर्फ हम उसको बस एक ग्लांस देंगे. जी, आई एम श्योर यू आर एबल टू सी द स्क्रीन नाउ. अच्छा जी, सो पब्लिक, जी, व्हाट इज पब्लिक, ये आप लोगों को आइडिया हो ही रहा होगा. ये हमने कवर किया हुआ है आई थिंक एज फार एज आई रिमेम्बर, बट just to connect it with the previous lecture. So public, according to Ginsburg, the word public refers to an unorganized aggregation of persons who are bound together by common opinions, desires, but are too numerous for each to maintain personal relationships with each other. यानी ये लोग बहुत ज्यादा होते हैं, इतने ज्यादा होते हैं कि एक दूसरे से हर कोई इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा होता, मगर जनरली इनका ओपिनियन, इनकी चॉइसेस, इनकी ख्वाहिशात, इनकी ambitions in life common होते हैं, and the collectively they are called public. ठीक है जी. Public opinion फिर क्या होगा? Public opinion is the sum of the decisions of the members of public on a particular issue. ये Ian Robertson कहते हैं. Public opinion consists of views of the members of public on a certain issue. यानी किसी टॉपिक के ऊपर एक
जी अस्सलाम वालेकुम। अनफॉर्चुनेटली माय इंटरनेट कनेक्शन वेंट डाउन। आपको पता ही है टुडे dust storm just sweeping across entire Karachi, especially the part of city I live in. So it's quite troublesome for me today. So even wasn't sure if I would be able to take the class because there was electricity outage. Now I think you're able to see the screen. So मैं अब request करूंगा आप में से किसी से कि who would come forward because ये हम cover कर चुके हैं topic classes में। जाजिब यानी if you can come forward और हमें बताएं कि ये जो पब्लिक ओपिनियन को जो जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, कुछ फैक्टर्स इधर लिखे हुए हैं, कैन यू रीड दीज अलाउड एंड लेट अस नो कि हाउ डू दे इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन? जाजिब Sure, sir. Factors that play their role in formation of public opinion are social environment, mass media, interest groups, opinion leaders, education institutions, government and state. These all try to help shape public opinion, and mostly because we have social media these days, it has a very triggering factor in shaping the opinion of people these days. how would you comment about other factors? One by one, can you go through each one of Okay. these and then just The first one is social environment. We can relate to this as our family has taught us what our values are or what is right and what is wrong. And it also extends towards whether we could have a political inclination towards a specific party or not, which is like, for instance, if the elderly of the home wishes to vote for a certain party, then the younger ones in the family will also follow suit, even if they don't agree. So that is our social environment. Mass media is the television and some other media handles as well, where देखें थोड़ा सा यू गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। देखें पब्लिक ओपिनियन और सोशलाइजेशन में थोड़ा सा फर्क है। पब्लिक ओपिनियन में एक फैमिली की बात नहीं करें, आप जनरल बात करें ना, पब्लिक एक लार्ज मैस है। यही जी, अगर आप देखें डिफरेंस, तो हम जब पिछले स्लाइड में पब्लिक को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें था कि सबके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, तो पब्लिक अवाम काफी एक बड़ा चंक है। उस लिहाज से अगर करेंगे तो करेक्ट रहेगा। okay. Third one is interest groups. These could range from corporate sector, or it could be the local government or influential people who are trying to run things in the background. So, for instance, these days people are quite active in local government in Karachi. So people are getting more inclined towards the public generally is towards the people who are actually doing the work and not who supposedly seemed to be doing the work initially when the 2018 elections came about. So there is a tilt of public opinion now that is going on the ground. Next is opinion leaders. These can be analysts or people who like to share opinions like in Dawn editorial or on news channels, and people can resonate with their opinions as well. Fifth is educational institution. These are your schools, colleges, universities, and they help shape what is right and what is wrong, how we are to conduct our life. And this sense of moving up the ladder is essentially developed through educational institutions. The last one is government and state. State and government, they decide what is the good things for the people, and they try to be an intermediary between the factors that are trying to run the business, and they're trying to offer the merit goods that are sometimes underproduced in a society. सोशल मीडिया के दौर में ओपिनियन लीडर्स का कुछ एक और बड़ी लॉट आई हुई है, वो कौन से होते हैं आजकल हम देख रहे होते हैं? थोड़े से एग्जांपल्स शेयर कर सकते हैं? uh, Sir, locally we call them keyboard warriors, but I guess they are influential people who use social media handle, and sometimes they have more power over the celebrities or the personalities that they're following. So they collectively try to influence their decisions sometimes as well. It could be on Twitter, it could be on other handles that are available. जी वो बिल्कुल, अगर आप कुछ एग्जांपल्स मेरे दिमाग में आ रही हैं, ऑल्दो आई एम नॉट अ वेरी सोशल मीडिया सेवी, लेकिन वो कौन है?
जुनेद अकरम नाम है उनका, वो जो खल्ली बल्ली Yes, कहते हैं, yes. और 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 भी कोई हैं, वो कौन से हैं, वो जो सीबीएम के हैं, बड़े मशहूर से व्लॉगिंग करते हैं, इंडिया पाकिस्तान में बड़े फेमस हैं, और I'm not सिंधी sure. सिंधी I एक्स में guess yes, I understand. Moro, there is one Moro, and there are other people as well who do that. yeah, Moru, and then a lot of people. So this is the new lot. So जैसे हम कहते हैं ना, सोसाइटी इवॉल्व कर रही है, चेंज कर रही है, तो इवन पब्लिक ओपिनियन लीडर्स जो हैं, या ओपिनियन लीडर्स हैं, ये भी इवॉल्व कर रहे हैं। इनका मीडिया जो है, इनका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन भी इवॉल्व कर रहा है, नए तरीकों से इन्फ्लुएंस किया जाने लगा है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि अली गुल पीर साहब जो थे, हैं बल्कि, वो अब और तरीके से चीजों में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ओपिनियन को। आजकल वो लॉन की सेल और गाड़ियां और ये सारी चीजें, तो यू सी इवन advertisement is a source of public opinion shaping. So just open up your mind. सोशियोलॉजी में एक चीज है, ये सोशियोलॉजी में ना सारे वर्ड्स के तकरीबन एक ही जैसे मतलब निकल रहे होते हैं, अगर आप कॉमन लाइफ में हम जिन्हें यूज कर रहे होते हैं। मगर सोशियोलॉजी में अगर सोशियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो पब्लिक का अलग मीनिंग होगा, फैमिली का अलग मीनिंग होगा, सोशलाइजेशन का अलग होगा, opinion जनरेशन का अलग। तो यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट, और बाकी sky is the limit. You can talk about a lot of things. So uh, yeah, uh, maybe when we'll be concluding the lecture, so I'll share one thing with you, which I just realized while I was traveling. Maybe it's related to opting sociology or not, so it is such an interesting set of facts. uh, but I still you know how close the subject is to my heart, so definitely uh, it's a very good subject, and it helps you in other subjects as well. Opinion leader. So who is going to talk about opinion leader? ये चीजें हम क्योंकि कर चुके हैं, तो today I am letting other people speak. Maybe Sayyida Saif, yes. Sayyida Saif, आप मुझे सुन सकते हैं, सुन सकती हैं? जी जवाहिर साहब, can you hear me? Yes, sir, I can hear you. Okay, so you are going to talk about this slide today. Sir, first of all, like this is my very first class that I'm going to take online. So I'm really afraid, sir. I could not be share my opinion on that. So I didn't know that this was the last class of the session. So I have been enrolled in this CSS corner just recently. Don't worry So, about it. Just speak whatever is written there, okay. and we are going to. Yeah, don't worry about it. बाकी all the lectures are going to be available to you. सोशियोलॉजी वाले तो आप सीएसएस कॉर्नर लिखेंगे तो सबसे पहले यूट्यूब पे आपको सोशियोलॉजी वाले ही लेक्चर्स मिलेंगे, तो डोंट Yes, sir, actually, I have recently been enrolled in the Aisha Manzil physical classes. So I just want to ask one thing, that are you going to conduct the next session classes online, or are you going to take the physical classes in Aisha Manzil or not? yeah, physical classes are almost impossible for me to take because I think after a few days I will move back to Lahore and then Islamabad and then some other country. So uh, unfortunately, my nature of job is such that I cannot stay in Karachi for long. Because of that, we can have a long distance relationship, as it is called jokingly. So maybe if need be, I will maybe reteach you distantly, or if it isn't needed, then you can always refer to the online lectures that are already there. I think sociology has been the most organized so far subject on CSS Corners channel, and still we have notes, and you can always consult me on phone if it is required. I love to help anyone who wants to get help. So Okay, sir. Jawahir, now you can. जी जी, you have a question? आपका सवाल है तो please पूछें. No, sir. Thank you so much for making it so much clear. Thank you, sir. No problem. Read aloud the slide, please. Okay. Opinion leader. An opinion leader can be either a politician, journalist, academician, a religious scholar,
movie star, sportsman, social worker, or a community leader who has the ability to influence and shape public opinion on particular issues. The characteristics of opinion leaders can be summarized as follows: credible, expert, sincere, innovative, sociable, simple, knowledgeable, communication, compassion. जी बिल्कुल सही है, थैंक यू. Who can? Thank Okay, you, sir. Sayyida Asif, now you can you please explain what is written? अच्छा, आपको मैसेज आ रहा है कि यू कैन हियर मी बट मे बी यू आर नॉट एबल टू स्पीक. कौसर 84. अरे भाई, पढ़ी हुई स्लाइड्स नहीं पढ़ी जा रही हैं. चले, लेट्स लीव इट. तो ओपिनियन लीडर अभी हमने डिस्कस भी किया, चांजीब ने भी बोला भी कि जो पब्लिक के ओपिनियन को शेप करते हैं, जो लोगों को बताते हैं ये चीज सही है, ये गलत है, इस बारे में ऐसे सोचना ठीक है. खान साहब एक बड़े स्ट्रॉन्ग और बड़े इन्फ्लुएंशियल ओपिनियन लीडर थे, बल्कि अभी भी हैं. आई थिंक करप्शन के मामले पे खान साहब ने ओपिनियन फॉर्मेशन में बड़ा किरदार अदा किया कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ही करप्शन है. वो है नहीं है, दैट इज अनदर थिंग, वी कैन टॉक अबाउट इट्स मेरिट, बट a big chunk in our society actually got convinced that it is, and ये एक opinion है, ये एक फैक्ट नहीं है अभी तक कि है या नहीं है, क्योंकि किसी के नजदीक इलिटरेसी है, किसी के नजदीक करप्शन है, किसी के नजदीक गुर्बत है, किसी के नजदीक फ्यूडलिज्म है, किसी के नजदीक लैक ऑफ डेमोक्रेसी है. मगर अगेन एक ओपिनियन ये, और पाकिस्तान में शायद सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं: क्रेडिबल, एक्सपर्ट, सिंसियर, इनोवेटिव, सोशल, सिंपल. ये सारे आसान तरीन अल्फाज हैं. आप खुद ओपिनियन लीडर का ये परसेप्शन होना चाहिए. अगर वो क्रेडिबल यानी काबिल भरोसा, अपनी फील्ड पे एक्सपर्ट होना चाहिए, और खुलूस होना चाहिए, उसके अंदर इनोवेशन होनी चाहिए, या तो कोई नई बात करे या उसी बात को किसी नए ढंग से करे, सादा होना चाहिए ताकि समझ आ जाए, नॉलेजेबल, साहिब इल्म होना चाहिए, कम्युनिकेशन उसकी अच्छी होनी चाहिए, एंड लास्टली कंपैशन होना चाहिए कि थोड़ा सा रहम दिल सा हो, अदरवाइज पीपल वुड नॉट बी एबल टू रिलेट टू. ठीक है जी. सोशल रिसर्च कैसे होती है, अब ये एक टॉपिक है कि सोशल मैटर्स के ऊपर रिसर्च कैसे की जानी चाहिए. ऐसे नहीं कि मैंने, चलें जी अब ऐसा करते हैं किसी को पढ़ाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक तो मैं आपको वैसे ही बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ, तो हम तो एक तरह से रिपीट कर रहे होंगे विद सम अदर थिंग्स. सो who is going to, Hina Ismail, are you able to hear me and speak? नजीर हुसैन, चलें ठीक है, I'll do it myself. अच्छा, ये सोशल रिसर्च, रिसर्च इज एन अटेम्प्ट टू नो न्यू थिंग्स, नई चीज को जाने, कोई मसला नहीं है. कि कोई चीज, नई चीज को, फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को जानना, उसके बाद उसको एक्सप्लोर करना किसी साइंटिफिक तरीके से. ऐसे ही नहीं कि जैसा दिल किया बस मैंने, क्योंकि साइंस या सब्जेक्ट्स के बारे में, जो भी साइंस हो, जो भी कोई इंटीग्रेटेड नॉलेज हो, तो उसका कोई एक तरीका होता है, एक सेट पैटर्न पे होता है. मेरा जैसे दिल करेगा मैं वैसे फैक्ट्स को जमा नहीं करूंगा. ठीक है. Its main purpose is to diffuse knowledge and establish theories on the basis of believable facts. उस तरह से theories बनाना, knowledge को diffuse करना, diffuse मतलब available information, एक set of available information से दूसरी information extract करना, दूसरे से तीसरी करना, and so on so forth. ठीक है जी. Systemized effort to gain knowledge we call research.
Sociological research refers to the structural observations of social behavior, values and messages. Sociological research से मुराद क्या है? स्ट्रक्चरल ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल बिहेवियर, यानी सोसाइटी कैसे बिहेव करती है, लोगों के क्या तरीकाकार होते हैं, लोग क्या सोचते हैं, इसको कहते हैं, इस चीज को सिस्टमैटिक तरीके से ऑब्जर्व करना, यानी एक ऑर्गेनाइज तरीके से, और फिर सेट ऑफ फैक्ट्स को कलेक्ट करना, ये जो है वैलिस एंड वैलिस के हिसाब से सोशलिस्ट। सिस्टमाइज्ड एफर्ट टू गेन नॉलेज वी कॉल रिसर्च। मौरी कहते हैं कि नॉलेज को हासिल करने का एक तरीका, मतलब दिस आर ऑल डिफरेंट मेथड्स। अच्छा जी, हाउ डू सोशियोलॉजिस्ट रिसर्च? बिल्कुल, जनरली क्या तरीकाकार होते हैं? द मेथड्स दैट सोशियोलॉजिस्ट रिलाई ऑन आर क्लासिफाइड as either quantitative or qualitative. Quantitative research uses numerical data. ये सारी चीजें आप अगर हमारे देखें, जब हमने सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के बाद वाली क्लासेस में आपको पढ़ा दिया है प्रॉपर। Quantitative research uses numerical data while qualitative rests on narrative and discussion. Qualitative होता है लोगों के opinions, लोग किस तरह से बात करते हैं। Qualitative research is considered to be practically suitable for exploratory research, यानी कुछ नया चीज explore करना, कुछ find out करना, किसी चीज के बारे में opinion को देखना। During the pilot stage of a research project, for example, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट हो रहा है, आप देखना चाहें उसका इम्पैक्ट क्या है, लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, blah blah blah. It is primarily used to discover and gain an in-depth understanding of individual experiences, thoughts, opinions and traits. मतलब इंडिविजुअल कैसे सोचते हैं, उनके ख्यालात कैसे हैं, ओपिनियन कैसे हैं, ट्रेंड्स कैसे हैं, and to dig deeper into the problem at hand. The data collection toolkit of a qualitative researcher is quite versatile, ranging from completely unstructured to semi-structured techniques. Most common applied qualitative methods कौन-कौन से हैं? जी, कौन-कौन से मेथड से हम क्वालिटेटिव रिसर्च जनरली कर रहे होते हैं? जस्ट अ मिनट जी। वो मेथड्स हैं जी, इंडिविजुअल इंटरव्यूज, आप लोगों के इंटरव्यूज करें, उन्हें बिठाएं, सेट ऑफ क्वेश्चंस उनके सामने पेश करें और उनसे जो है वो आप सवाल पूछें। जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, जस्ट अ मिनट। ओके, आई एम बैक। अच्छा जी, ग्रुप डिस्कशंस, बहुत सारे लोगों को बिठा देते हैं, 10-10, 20-20 लोगों को सवाल करते हैं, डिस्कशंस होती हैं, एक सवाल से दूसरा सवाल निकलता है, दूसरे से तीसरा, बाजों का जब डायरेक्शन चेंज हो रही होती है डिस्कशन की, तो आप खुद उसके अंदर कोई ना कोई सवाल छोड़ देते हैं। फोकस ग्रुप्स में होता है कि आप खुद 5-6 सवाल दे रहे होते हैं, 10-12, और उन्हीं पे डिस्कशन कर रहे होते हैं। एक सेट पैटर्न होता है कि आपने उन सवालात के स्कोप को नहीं, बिहेवियरल रिसर्च ऑब्जर्वेशंस होती हैं। जनरली आप अवाम में अपनी या कोई सेट ऑफ पीपल को आप सिलेक्ट कर लेते हैं, जहाँ पे आप सर्वे कर रहे होते हैं या उनकी बिहेवियर को पर्टिकुलर किसी सिनेरियो में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज अबाउट नंबर्स एंड फिगर्स। अब ये कितने फीसद लोग फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में इस्लामी निजाम चाहते हैं, कितने फीसद लोग सदारती निजाम चाहते हैं, कितने फीसद लोगों के नजदीक जमहूरियत हमारे मसाइल का हल है। तो ये फीसद कैसे आता है? आप सर्वेस कर लेते हैं, लोगों से सवाल कर लेते हैं, पाकिस्तान में कितने फीसद लोग जो हैं वो अपनी बेटियों को यूनिवर्सिटी भेजने को तैयार हैं, कितने फीसद पाकिस्तान में औरतों की शादी 20 साल से पहले हो जाती है, कितनी पाकिस्तान में चाइल्ड ब्राइड्स हैं, कितने फीसद लोग डोमेस्टिक वायलेंस को सही समझते हैं या इंटरनल मैटर समझते हैं, कितने फीसद लोगों के नजदीक मैरिटल रेप कोई सोशल इशू नहीं है, कितने फीसद लोग जो हैं वो तेजाब या ऑनर किलिंग को ठीक समझते हैं और उसके लिए दीनी कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। तो जनरली ये सवाल जवाब फीसद कैसे पता चलता है? आप लोगों से सवाल करते हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली उनको बाज़ औक़ात नहीं भी पता लगने देते, और जो आंसर्स आते हैं कितने फीसद लोगों का परसेप्शन क्या है, लोग 1 to 5 उसको कैसे रेट करते हैं, इमरान खान की गवर्नमेंट से लोग कितने मुतमईन है, 1 से 5 तक रेट करें, बगैर न्यूमेरिकल आएगा आंसर।
कोई चीज जिसको आप कंप्यूट कर सकें, जिसको आप मेजर कर सकें। सोशल रिसर्च के मेथड्स में सर्वेइंग, सेकेंडरी एनालिसिस, एक्सपेरिमेंट, फील्ड रिसर्च, फील्ड में जाएं, लोगों के साथ देखें। सर्वे कैसे होता है जी? सर्वे इन विच पीपल आर आस्क्ड to answer a series of questions is the most widely used research method among sociologists. It is ideal for studying a large number of people. बिल्कुल ठीक है. In surveys, the information is obtained through either a questionnaire or an interview. Questionnaire is a written set of questions that आप या तो written set of questions दे देते हैं उनको, या फिर आप उनको बिठा के खुद सवाल कर रहे होते हैं। तो ये एक मीम है, आप इसको, मीम तो ठीक है, सॉरी कॉमिक है, ऑल ऑफ यू रीड इट योरसेल्फ, आई एम आल्सो रीडिंग इट माय सेल्फ। जी, I hope you are able to understand what was written. Close ended and open ended questions, कुछ होते हैं close ended questions जिनके जवाब आपको पता होते हैं, हाँ ना, yes no, 100, 10, 12, 4, 1, 2, 3, 4, 5 डेफिनेट आंसर्स हो, जिनके आंसर्स का आपको स्ट्रांगली अग्री, अग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, एक न्यूट्रल होता है। तो ये सारे जो हैं ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं, आप अपना व्यू बताएं, आपके ख्याल में इसका क्या जवाब होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, in your own words, please describe your views on the education you have received so far. Again, आपके सवालों के की मिसालें देख सकते हैं कि किस तरह से मिसाल दी गई है, ओपन एंडेड के भी, क्लोज एंडेड के भी। सेकेंडरी एनालिसिस क्या होता है? यूजिंग प्री कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन, पहले से किसी टॉपिक पे आपके पास इंफॉर्मेशन है और आप अब उससे कुछ और सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। दैट इज इंफॉर्मेशन समवन एल्स हैज, किसी और चीज के बारे में सर्वे हुआ और आपने उसमें से, फॉर एग्जांपल, कितनी फीसद खवातीन को जो है वो अपनी सैनिटरी हेल्थ की अवेयरनेस है या बाकी चीजों की, और उनकी एजेस क्या हैं, ये ज्यादा अवेयरनेस किस सोशल सेगमेंट में। इसके साथ साथ उसने ये भी कलेक्ट कर लिया कि इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ और रिप्रोडक्टिव डिसीजन मेकिंग की पावर कितनी खवातीन में, वो किसी ने पहले ही जमा करके रखा हुआ था। आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ या फैमिली प्लानिंग पे जब सोशल रिसर्च कर रहे होंगे तो आप उस डेटा को उठा के उसके ऊपर एनालिसिस कर दें, तो आपको स्टैंड अलोन दोबारा से सर्वे नहीं करना पड़ा, आपने पुरानी एनालिसिस ही पुराना कलेक्टेड डेटा के ऊपर ही अपना एनालिसिस लगा दिया, तो दैट इज आल्सो डूएबल। नहीं, लिटरेचर रिव्यू तो होता है कि जो रिसर्च, पहले रिसर्च पेपर लोगों ने लिखी है, सेकेंडरी में लिटरेचर रिव्यू उसका पार्ट हो सकता है, वो तो हर रिसर्च मैकेनिज्म में सबसे पहली चीज लिटरेचर रिव्यू होता है। सेकेंडरी रिसर्च ये है कि किसी एक टॉपिक पे पहले कुछ डेटा कलेक्टेड है सर्वे से या इंटरव्यू से, अब आपने किसी और टॉपिक पे रिसर्च करनी है तो आप उसी अवेलेबल डेटा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर लें, उसी पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगा के आप अपने टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, इसको कहते हैं सेकेंडरी। यानी आपको दोबारा से सर्वे या इंटरव्यू करने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं भर दूं, ठीक है जी, आपने अवेलेबल उसको यूज किया। इट इज अ वेल रिस्पेक्टेड मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा इन सोशियोलॉजी, इनफैक्ट द फर्स्ट सोशियोलॉजिस्ट टू यूज स्टैटिस्टिक्स इन अ सोशियोलॉजिकल स्टडी। नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, ईमाइल डरकेम, जिन्होंने किस टॉपिक पे रिसर्च की थी बताइए जी, एनीवन हु इज एबल टू रिमेंबर ईमाइल डरकेम? सर मैं
I think he researched on the causes of suicide. जी जी, वेरी गुड। इमाद हकीम ने सुसाइड के ऊपर स्टैटिस्टिकली भी डेटा उनके पास पहले से था। ये नहीं था कि अब सीधी सी बात है वो मरे हुए लोगों के पास तो नहीं जाएंगे, तो जो पुलिस रिकॉर्ड्स और जो चीजें थी उन्होंने उसी के अंदर रिसर्च की थी अपनी, के अवेलेबल था कि नहीं ये बंदा इसने सुसाइड से अपनी जान ली, लेकिन जान लेने की वजह क्या थी, उसके हालात क्या थे, वो उन्होंने अवेलेबल इंफॉर्मेशन को यूज किया। उसके लिए उन्होंने बाकायदा कोई अलग से रिसर्च नहीं की, ये सेकेंडरी रिसर्च है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। लेट्स स्टार्ट विद एडवांटेजेस। प्री कलेक्टेड डेटा होता है सोशियोलॉजिस्ट को पास inexpensive high quality information. Existing sources of information permit the study of a topic over a long period of time, तो ज्यादा टाइम में आप उसको डेप्थ में स्टडी कर लें। We can trace the changes in the relative income levels of African Americans and white। आप मतलब कलर्ड पीपल और वाइट्स के दरमियान जो है आप देख सकते हैं कि इनकम में क्या है, क्योंकि सेंसस के अंदर तो एक बड़ी ट्रकलोड ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। सेंसस उठाया, आपने देख लिया कि पाकिस्तान में किस सूबे के अंदर तालीमी हालात बेहतर है, क्यों? क्योंकि वो आपको लिटरेसी रेट बता देगा। तो अब आपने रिसर्च के लिए कोई सर्वे नहीं किया, आपने वही सेंसस का डेटा उठाया और आपने एजुकेशन वाले सेक्शन से अपने काम की चीजें उठा ली। और ये बहुत ज्यादा होता है पाकिस्तान में भी और बाकी जगह पे भी, क्योंकि आप हर टॉपिक पे सर्वे और सेकेंडरी प्राइमरी एनालिसिस नहीं कर सकते, ये बहुत महंगा काम होता है। The researcher cannot influence answers because the data have been collected by others। तो ये भी नहीं हो सकता है रिसर्चर बाइस नहीं आएगा इसमें। डिसएडवांटेज, existing information may not exactly suit the researcher's need because it was gathered for a reason। ये तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम। बाज़ औक़ात जो डेटा पहले से कलेक्टेड है उसकी मियाद एक्सपायर हो चुकी है, पुराना डेटा है। अब आप 1998 का सेंसस उठा के आप पाकिस्तान में 2022 की पॉलिसी कर रहे हैं तो आपकी गलती है। हमारे यहाँ सेंसस आई थिंक 2017 में हुआ और उससे पहला सेंसस 98 में हुआ, 19 साल बाद पाकिस्तान में हुआ। तो अब आप बताएं कि जो 2016 में रिसर्च कर रहा होगा और वो हमारे यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ या बाकी चीजों को देख रहा होगा, उस बेचारे के पास तो सही पिक्चर ही नहीं होगी। Little may be known about collection methods, the people who first collect the data or the collection methods may have been biased। बिल्कुल ये भी तो हो सकता है जिसने कलेक्ट किया था उसने अपने बायस, उसके कुछ बायसेस होंगे जो इन्वॉल्व होंगे और उसने उस हिसाब से किया। एक्सपेरिमेंट इससे अगली टाइप होती है एक्सपेरिमेंटल मेथड provides a reliable way of studying the relationship between two variables under careful and controlled conditions। careful और controlled conditions में reliable way of studying relation। researcher holds all variable constant। तमाम variables को वो constant रखता है except one which he varies। वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल फील्ड एक्सपेरिमेंट, लैब एक्सपेरिमेंट ये हम करा चुके हैं आपको, इसलिए हम नहीं अभी डेप्थ में जा रहे। फील्ड रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च uses narrative or descriptive data rather than quantitative numerical data। Some aspects of society can best be revealed by qualitative methods। बिल्कुल। अब हर सवाल का जवाब नंबर्स नहीं हो सकता, हर सवाल का जवाब हाँ ना नहीं हो सकता, हर सवाल का जवाब एग्री डिसएग्री नहीं हो सकता, हर सवाल का जवाब इतने परसेंट उतने परसेंट नहीं। सवाल फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि जी पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकता है पाकिस्तान की आवाम के नजदीक, अब हर कोई अपना सुनाएगा जी तालीम को बेहतर करें और तालीम के अंदर लड़कियों की तालीम पे तवज्जो दें, टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल। अब उसने कहा तालीम ही है, लेकिन उसने तालीम के आगे कितना कुछ ऐड कर दिया अपने एक्सपीरियंस से। कोई कहेगा पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान के मसाइल हल करने हैं तो आप डेमोक्रेसी लाइए, डेमोक्रेसी के बारे में बयान करेगा कैसे लाए। तो ये क्वालिटेटिव डेटा जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा treasure of information। The most often used approach to field research is the केस स्टडी। केस स्टडी होती है कोई केस पहले से हो चुका है, आप उसको स्टडी करें, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, क्या किया गया क्या नहीं किया गया, जो किया गया उसका क्या असर हुआ, जो नहीं किया गया वो किया जाता तो उससे क्या हो जाता। सो दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट। A thorough investigation of a single group, incident, or community। This method assumes that the findings in one case can be generalized to similar situations। तो ये सोचा जाता है कि एक
आपने पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जो किया वो आप तमाम जगह पे, द कंक्लूजन ऑफ स्टडी ऑन ड्रग यूज इन शिकागो should apply to the large cities as well. It's researchers' responsibility point out factors in the study that are unique and that would not apply. मतलब आप फिर एक शहर की रिसर्च दूसरे के ऊपर लागू कर दें. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ये चीजें हम कर चुके हैं. ये मैं आपको ये स्लाइड फ्लैश कर देता हूँ. यू गो थ्रू इट जस्ट, सॉरी. ये आप बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस. Okay ji. Now few questions of past paper for you. How can moral degeneration is be scientifically studied, delineate entire research process? Differentiate between qualitative and quantitative way of studying any social phenomenon elaborate. ये हम qualitative and quantitative ये दोनों 2020 के पेपर में भी आए. I would not attempt first question because generally research design करना एक tricky question होता है and I used to skip this question. अगर again आप कुछ भी कर सकते, moral degeneration है तो उसके लिए आप पहले hypothesis बनाएं, फिर आप ये देखें कि कौन कौन से social theories आप apply कर सकते हैं. theory of enemy भी आप apply कर सकते हैं जो कि इमाइल डर्किम की है, और इस तरह की चीजें. और उसके बाद अब आप अपना रिसर्च ग्रुप आइडेंटिफाई करें, क्वेश्चंस बताएं, क्वालिटेटिव रिसर्च होनी चाहिए, और फिर इस तरह का टॉपिक्स होते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन एंड नाउ इट इज अप टू यू कि आप बताएं कि आप लोगों के क्या सवालात हैं. हमारा सोशियोलॉजी का जो अब आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, it's all up to you. Just let me know whatever you want to ask from the entire subject. Paper attempting techniques, any question, past paper, anything. Sir, are there some specifics regarding the answer pattern of sociology, or just referring to theorists? आवाज जो है वो कुत्ते की आ रही है अभी. Sorry. सर मैं ये कह रहा था कि पेपर पैटर्न जो है वो बेसिकली आंसर पैटर्न कोई स्पेसिफिक तरीके से लिखना जरूरी है, या अगर हम थ्योरिस्ट को रेफर कर दें अपने आंसर्स में तो अच्छा आंसर बन सकता है उसमें काफी. जी, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन. और सोशियोलॉजी, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं इंटरेस्टिंगली, मे बी वी कैन स्टॉप शेयरिंग इट नाउ, स्टॉप द लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग अब स्टॉप कर दें बिकॉज इट्स जस्ट जनरल डिस्कशन. अच्छा जी, तो देखिए मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में आए 73 नंबर और सेकंड अटेम्प्ट में आए 33 नंबर. मतलब 33 तो ऐसे है कि बिल्कुल ही एंड में उसने शायद रहम खा के जो है वो पास कर दिया. 73 शायद हाईएस्ट या सेकंड हाईएस्ट मार्क्स होंगे 2019 में, because again sociology was a low scoring subject even then. So I don't think there is a formula answer to or formulaic way of answering any question, but having said that,
हाउ वुड आई अप्रोच, बिकॉज जनरली आप देखें तो सोशियोलॉजी के पेपर में 3 सवाल तो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से आ जाते हैं, बिल्कुल साफ सुथरे से ना। तो उनको अटेम्प्ट करने का तो यही तरीका है, जैसे मैंने आपने नोट्स देखे ना मेरे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, मैं तो जनरली उसी तरह से अटेम्प्ट कर देता था। और मेरी 2 चीजें करता था, एक तो जो हेडिंग है वो हेडिंग बना दी, अगर कोई किसी किस्म का कोई फ्लो चार्ट बन रहा है तो बना दिया, अदरवाइज बिल्कुल कोई खास मेहनत नहीं की। लेकिन 2 चीजें मैं जरूर करता हूँ सोशल साइंसेस के अंदर, और शायद उन्होंने मुझे हेल्प भी की हो। वन इज लिंकिंग द थ्योरी to something practical that we see around us. It is very important, and especially for subjects like sociology or criminology, it really matters. क्योंकि ये सब्जेक्ट्स बहुत जेलसली एक चीज क्लेम करते हैं और बड़ा बुरा मानते हैं अगर इस क्लेम को ना माना जाए कि वी आर एज रेलेवेंट एज नेचुरल साइंसेज एंड वी आर आल्सो एन इंटीग्रेटेड स्टडी। हम कोई गट फीलिंग से हो जाने वाली या इवॉल्व होने वाला सब्जेक्ट नहीं है, हम सिस्टमैटिक तरीके से किसी ना किसी टॉपिक को डिस्कस करने वाली चीज। तो जब आप किसी प्रैक्टिकल सिनारियो से उसे लिंक कर देते हैं, अपनी एग्जांपल्स के अंदर कुछ ऐसा कोट करते हैं या आप अलग से हेडिंग देकर करते हैं 2 एग्जांपल्स, तो दिस कैन डू लाइक मच गुड फॉर यू। इसके साथ साथ आखिरी चीज, कंक्लूजन में या कंक्लूजन से पहले आप अपना ओपिनियन जरूर दें। व्हाट डू यू थिंक अबाउट this theory, this theoretician, or this particular topic, or this social problem, and how do you think कि इसको कैसे आजकल के दौर में टैकल किया जाना चाहिए। ये तो theoretical perspective। एक आधा आपको सवाल अटेम्प्ट करना होता है मॉडर्न प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर, तो उसका भी जवाब एग्जैक्टली इसी तरह से होना चाहिए कि आप प्रॉब्लम लिखें, फिर कुछ 1-2 थ्योरेटिशियंस को रेफर कर दें। मेरा तो एक बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका है कि हर सोशल प्रॉब्लम, आई बिलीव अकॉर्डिंग टू माय फेवरेट सोशियोलॉजिस्ट सी राइट मिल्स, उसको लिए सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन करें और उस सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन को आप अपने आंसर में लिखें, और फिर आप कुछ 2-3 थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स बयान करें कि फलाना फिलोसफर कैसे देखता था, फलाना थ्योरेटिशियन कैसे देखता, and then you propose a solution for it. So that's how it gets done. Generally मैं रिसर्च मेथड वाला सवाल नहीं अटेम्प्ट करता था, although I think if you could see the notes, they are very comprehensive and I actually had worked hard on it. But again, social research वाले सवाल थोड़े से ज्यादा बायस से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं एग्जामिनर के, so don't need to do it. I hope I was able to answer. थैंक यू सर। अच्छा, इसके अलावा कोई सवाल है पास? अच्छा, किसी का कोई सवाल है पास पेपर से मुतालिक, कोई स्पेसिफिक टॉपिक से मुतालिक, कोई चीज आपको नहीं समझ आ रही है या कुछ भी? No question? Sir, can I make one request, please? Please. Sir, I don't know, is it relevant to today's class or not? Since I am taking this class for the very first time. नहीं, आप कोई भी सवाल So, करें, sir, actually, I feel very apologetic that I missed all the session because I was uninformed about this, and I will definitely watch all the videos which are there in the YouTube of yours. तो मुझे सर आप प्लीज ये काइंडली बता दें कि any book that you suggest that we can use for the CSS preparation. मेरे पास जो 2 बुक्स में पढ़ रहा हूँ वो फॉरेन राइटर्स के हैं और वहाँ पर
each and every example has been given based on American society or the UK society. तो मैं जब भी कोई केस पढ़ता हूँ उसमें एग्जांपल्स अमेरिका के और यूके के होते हैं या यूरोपियन कंट्रीज के, तो मैं अपने सोसाइटी से उसको रिलेट बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ। तो इज देयर एनी इंडियन राइटर्स बुक और एनी पाकिस्तानी राइटर बुक? सो प्लीज सर, अगर मैं वो भी थोड़ा स्टडी करूँ तो मैं रिलेट कर आप पाऊँ। अभी तक कौन से 2 फॉरेन राइटर्स को पढ़े सर बताएं? मेरे पास एक ये सोशियोलॉजी पाउल बी हॉटन, and the next one is the sociology 10 edition Richard T Satchford. ये दो मेरे पास है जो मैं अभी तक स्टडी कर चुका हूँ। I think Horton and Hunt is a very good book as far Yeah, as I I know. have this one, लेकिन इसके सारे सर जो रेफरेंसेस और जो एग्जांपल्स है वो हमारे सोसाइटी में मुझे समझ जी नहीं आ रहा था किस देखिए, तरह आसान चीज जवाई साहब 2 चीजें, एक तो आपको किसी ना किसी पाकिस्तानी ऑथर को तो पढ़ना चाहिए। तो मैंने तो 2 किताबें पढ़ी थी पाकिस्तानी के लिहाज से अगर देखें तो वो हैं आई थिंक अमल सादिक और कुछ एक और नाम है। ये जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की बड़ी पतली सी बुक है, बड़ी ब्रीफ सी बुक है, बट दे हैव रिटन इट वेरी वेल। गुड पार्ट इज अननेसेसरी डिटेल और बहुत ज्यादा बीटिंग अबाउट द बुश उन्होंने नहीं किया। सो आई रियली लाइक द बुक। कुछ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स उन्होंने बहुत ही कमाल लिखे हुए हैं जो कि इवन टगा में नहीं लिखे हुए। तो टगा दूसरी बुक थी। टगा इज गुड टू अंडरस्टैंड सोशल कॉन्सेप्ट्स, जो आजकल हमारा लास्ट टॉपिक हम जिसको डिस्कस कर रहे थे। तो ये 2 बुक्स मैंने पाकिस्तानी पढ़ी थी। आप ये कर सकते हैं। टगा के अंदर पाकिस्तानी एग्जाम्पल्स भी हैं, लेकिन हॉटन एंड हंट बहुत अच्छे तरीके से बड़ी डिटेल में जाके एग्जाम्पल देते हैं। पाकिस्तानी बुक्स का ये नुकसान है ऐसे नहीं। तो आप उन पाकिस्तानी बुक्स को पढ़ें और साथ साथ एक और चीज़ है, अखबार पढ़ें जनाब। डॉन अखबार पढ़ें, मुआशरे को खुद आंखें खोल के देखें। सोशियोलॉजी की आसान बात ये, उसकी एग्जाम्पल को आपको ज़्यादा देर ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप 5-10 मिनट ही गौर करेंगे ना, आपको अपने मुआशरे में कोई ना कोई एग्जाम्पल। लेकिन अखबार पढ़ें, डॉन अखबार पढ़ें, एडिटोरियल्स उसके पढ़ें, उसका मेट्रोपॉलिटन पढ़ें। आपको एसिड क्राइम, आपको प्रोस्टिट्यूशन, आपको थेफ्ट, आपको यूथ बल्ज, आपको क्या कहते हैं रिलीजियस बिगेटरी, आपको रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, हर टॉपिक के ऊपर बेपनाह इंफॉर्मेशन। आई थिंक द ओनली थिंग दैट डिड मैजिक फॉर मी, शायद हम आप लोगों को याद होगा जब हमने सोशियोलॉजी स्टार्ट किया था, वो यही था। आई डिड नॉट हैव मच टाइम टू स्टडी एंड द ओनली थिंग दैट हेल्प्ड मी, आई एम सॉरी, कोविड आफ्टर शॉक्स अभी भी हैं थोड़े से, तो that helped me was my ability or my like knack for reading newspaper. मैं बहुत डेप्थ में बहुत शौक से न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और उस मेरे न्यूज़पेपर को पढ़ते हुए मुझे कितने साल हो गए। आई वॉज इन क्लास 6 और उसका कोई CSS से ताल्लुक नहीं है। मैं वैसे ही एक शौक, एक नशे के तौर पे न्यूज़पेपर पढ़ता था, और तो मुझे शौक भी हो गया, मुझे हेल्प भी बहुत होती है। मैंने बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से तैयारी नहीं की है, एंड सिंस आई वाज डूइंग अ फुल फ्लेजेड प्राइवेट जॉब एंड व्हिच वाज लाइक रियली फुलफिलिंग टू, अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस वजह से मैं ज्यादा प्रिपरेशन नहीं कर पाया। सो अल्लाह हैड बीन काइंड टू मी, तो उस वजह से बचत हो गई और अच्छे आ गए, मार्क्स भी अच्छे आ गए। सही है जी। सो ये चीज है। आप पाकिस्तानी ऑथर्स के नाम मैंने आपको बता दिया। हॉटन एंड हंट इज अ वेरी गुड बुक। और इवन मैं तो, मुझे किसी एक सोशल कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं आती थी, मैं खुद डेफिनेशन पढ़ा, और सोशल कॉन्सेप्ट क्या मैंने कभी डेफिनेशन मुझे याद ही नहीं रही, और इसमें मेरी कोई काबिलियत नहीं, मेरी बेवकूफ़ी है। बट आई हैड टू लाइक मेक अप। आपकी अंग्रेजी मुनासिब हो तो आप कोटेशन भी बना सकते हैं, आप डेफिनेशन भी बना सकते हैं। मैंने अपने 2 एसेज में सिर्फ एक कोटेशन याद की हुई थी, बाकी सारी खुद ही बनाई। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? सर जी जी फरजाद साहब। सर बस ये सवाल पूछना था कि अगर कंपैरिजन आ जाता है ना थ्योरीज का, कि ऐसे लिबरलिज्म को और किसी भी मतलब कैपिटलिज्म को, कम्युनिज्म को आप कंपेयर करें, तो इसको अटेम्प्ट करने का क्या तरीका होगा? बस सिंपल आप पहले कैपिटलिज्म को हेडिंग डाल के एक्सप्लेन करते हैं और हाँ नेक्स्ट हाँ, हेडिंग। और
लेकिन लिबरलिज्म क्यों आएगा सोशियोलॉजी में? नहीं, मैं आईआर बात कर रहा हूँ सर। तो आज एज एन आईआर क्लास नहीं है, आज सोशियोलॉजी की क्लास। ठीक है सर, लेकिन बस मुझे कंपैरिजन का पूछना था। वो तो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि लिबरलिज्म नहीं, फॉर मैं एग्जांपल। आपकी बात समझ गया। हाँ, आप दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन कर दें या उनकी कुछ बेसिक चीजों को बीच में लाइन लगा के कर दें कंपैरिजन में, बोथ वेज इट इज गुड। मुझे नहीं समझ आती है, लोग साफ सुथरा हेडिंग्स बना के लिखें हर तरीके से, जनाब बहुत अच्छा होता है। लोग बहुत मेहनतें करते हैं और कंटेंट के ऊपर उतना जोर नहीं होता। तो कंटेंट के ऊपर जोर दें, बाकी सब हो जाता है। आपका पेपर पढ़ा जाता है, लेट मी अश्योर यू। ये मैं आपको यकीन से बता देता हूँ कि पेपर पढ़ा जाता है। तो पेपर में जो लिखें वो खबरनामा नहीं होना चाहिए। वो ये नहीं होना चाहिए कि बारिश हो रही थी और मैं मैच देखने गया। इट हैज टू बी समथिंग दैट यू नो, और एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं होता। ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी, तो मैं बता ही रहा था कि आई वाज जस्ट लाइक हैविंग going through something, and then I realized that the second position holder and my marks, the only difference was that he had picked up another second position holder, whatever, I should not name anyone, some position holder and my marks. The only difference was him scoring 10 more marks in interview, which is fine, could have been managed. But the other problem was that I picked up sociology and he picked up some regional language, and the difference was all exactly the same numbers. So sometimes your choice of subject matters. Sociology का प्यार हमें थोड़ा सा महंगा पड़ गया, but still God is great. I got the department of my choice, my liking, so that doesn't bother me much. मगर again, subject आप जब लें तो उस हिसाब से लें, और जो भी सब्जेक्ट लें उसके अंदर फिर आप थोड़ा जरा दिल जान लगा के मेहनत करें, तभी होगा। एनी अदर क्वेश्चन? क्रिमिनोलॉजी की मैं बुक्स आपको दोबारा कभी बता दूंगा, मुझे याद करा दीजिएगा, या मैं अबू बकर को बता दूंगा, वो फिर आपको बता दूंगा। सोशियोलॉजी के नोट्स जिसके पास नहीं है वो अबू बकर से ले लें। पाकिस्तान अफेयर्स, वो करंट अफेयर्स वाले नोट्स, लेट मी कॉपी देम अगेन फ्रॉम समवेयर, तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक। हमारी क्लासेस प्रॉब्ली ये सेशन शायद खत्म हो गया है, बट डोंट वरी, आई एम अवेलेबल, जस्ट व्हाट्सएप मी, टेक्स्ट मी। थोड़ा सा टाइमिंग का ख्याल रखें और थोड़ा सा पेशेंट रहें, इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड बैक। और बेस्ट ऑफ लक, इफ you have any query I can be reached at. Remember me, my family in prayers. We are going through some tricky time, but inshallah, I'm sure your prayers will help us go through these. Thank you very much everyone, take care, thank you, best of luck.